Good morning, UKG class. Let's start our second chapter revision because we already did our senses first, second, third, fourth complete. First is eye, second ears, third nose, fourth tongue. So now let's revise it. We see with our eyes. So what we do with our eyes? Our eyes help us to see the different object around us. Okay? And second organ, second sense is we hear with our ears. So ears help us to hear. With the help of our ears, we can hear and differentiate the different kind of sounds. Now third, we smell with our nose. So third sense is nose. So what we will do with the nose? Smell is the power of detecting a fragrance or an odor. We can smell with the help of our nose. And fourth, we learn we taste with our tongue. So what we learn? Tongue, food tasteless. If the nose is blocked, when we eat something, when we have a cold, it doesn't taste proper. इट्स टेस्टलेस. इसका मतलब क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो जब हमें कोल्ड होता है और ब्लॉक होती है नोज़, तो हमें टेस्ट नहीं आता खाने का अच्छे से और कड़वा भी लगता है ना कई बार, तो टेस्टलेस. सो टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. 4 main taste. Sweet, yesterday I explained you sweet, meetha, salty, namkeen, sour, lemon, neebu, and bitter, karela or medicine. Okay, so these are main taste. When we taste 4 type. So one is sweet, second is salty, third is sour, means khatta, and fourth is bitter, kadwa. Okay, so now the sense of smell is connected to the sense of taste. Now the fifth senses are skin, O-U-R-R, S-K-I-N, skin, helps us to feel. So what does skin do? Our skin acts as a blanket to protect us from heat, cold and germs. So
इसका मतलब क्या है कि जो स्किन है वो हम लोगों को, हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करती है। एक ब्लैंकेट, जैसे हमें ठंड लगती है तो हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा हमारी पूरी बॉडी, पूरे स्केलेटन को, ठीक है, और उसको पूरा कवर कर रखा है और हमको प्रोटेक्ट मतलब सेफ करती है हीट से, गर्मी, कोल्ड, ठंड और जर्म्स, कीटाणुओं से। हमारी बॉडी इन सब को हमारी बॉडी के अंदर घुसने नहीं देती है। और ये स्किन हमारी बॉडी पर एक ब्लैंकेट की तरह, ब्लैंकेट मीन्स एक कंबल की तरह काम करती है, ठीक है। ROUR आर हमारी, SKIN स्किन, हेल्प मीन्स मदद, स्किन मीन्स त्वचा, हेल्प्स मीन्स मदद, अस मीन्स हमारी, टू फील, फील मीन्स महसूस करना। जब हमारी बॉडी पे कोई चीज़ लगती है गर्म या ठंडी तो हमें पता चल जाता है और जल्दी से हम उस स्पेस को, जैसे हैंड पे अगर हमारा ज़्यादा गर्म चीज़ लग गई तो हम उसको एकदम से अपनी तरफ खींच लेते हैं ऐसे, ओके। सो वी विल एक्सप्लेन नाउ दिस, ओके, दीज। सॉफ्ट, सॉफ्ट का क्या है? सॉफ्ट मीन्स नरम। सो सॉफ्ट मीन्स ईजी टू मोल्ड, कट, फोल्ड, ओके। जब सॉफ्ट होती है कोई चीज़ तो हम क्या करते हैं, उसको घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं उसको, और दैट्स मीन्स इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स नॉट वेरी हार्ड। एंड देन सेकेंड, हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर। ये चीज़ें हम टच करके पहचान सकते हैं, कठोर, हार्ड। सॉलिड, नॉट ईजीली ब्रोकन, इसका मतलब है कि ठोस है और उसको हम आराम से जल्दी से मोड़ नहीं सकते और तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट इज शार्प, धारदार, धारदार मीन्स जिससे हम इतना धार हो कि कोई चीज़ कट सकती है, और अगर हमारे स्किन पे लग जाएगी तो वो भी कट सकती है और ब्लड निकल सकता है। सो एन एज और पॉइंट दैट इज एबल टू कट। ये देख रहे हैं, शार्प नाइफ। So look, he is touching his finger. So don't do this at home, otherwise you hurt. Now pointed. Yesterday I told you your pencil is pointed. So don't take the pencil near your eyes, nose or your skin, otherwise you will hurt. Pointed means nokila. Nokila, having a sharpened to tip or end. Tip means point, उसके point पे बिल्कुल sharp होता है। Next is smooth. Smooth means even surface without lumps. Even means बिल्कुल surface plain, कोई भी उसमें लंप नहीं होते, कोई ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ नहीं होती है, बिल्कुल इस बुक की तरह स्मूथ। नेक्स्ट इज रफ। रफ मीन्स अनइवन, मीन्स वो ऊपर नीचे होते हैं, इरेगुलर सरफेस, नॉट इवन सरफेस, ओके। रफ मीन्स जैसे ये लकड़ी का वो दे रखा है, उसमें ऊंचा नीचा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉट। हॉट एवरीवन नो,
garam, very warm, a high degree of heat, a high temperature. टेम्परेचर हम लोग भी मेजर करते ना जब हमें फीवर होता है. और हॉट मिल्क, हॉट टी हमें नहीं पीनी चाहिए. क्या होता है? अदरवाइज आवर टंग विल हर्ट. कोल्ड, नेक्स्ट इज कोल्ड. कोल्ड मीन्स ठंडा. लुक एट दैट. On this hand he is holding ice, so it's very cold. You cannot hold very long the ice on your hand. Yes, cold means low temperature, freezing cold, low temperature or freezing. And last is wet. Wet means गीला. Dry means opposite of wet is dry. Dry means सूखा and wet means गीला. That means covered with water. Something, clothes covered with water, all on the clothes, all over the water. When you squeeze it, water will come out. So wet. So now we learn soft, hard, sharp, pointed, smooth, rough, hot, cold, wet. So these things we will feel on our skin. Our skin help us to feel these all. When we touch with our skin, we feel. जब हम ये चीज़ें अपने हाथ से या अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से टच करते हैं, छूते हैं, तब हमें पता चलता है कैसा है. ठंडा है या गर्म है या रफ है, पॉइंटेड है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कोल्ड है. ओके, सो नाउ वी लर्न अबाउट eyes. Our eyes help us to see the different objects around us. Second, we learn ears. Ears help of our ears. Ears help us to hear or listen. We can hear, differentiate the different kind of sounds. Now next, third, we learn nose. With the help of nose, what we smell. Smell is the power of detecting a fragrance or an odor. We can smell with the help of our nose. And number 4, tongue. The sense of smell is connected to sense of taste. Tongue help us to understand taste. The taste bud of the tongue help us to enjoy the different flavor of food. Okay. Now 5th, skin. Our skin act as a blanket to protect us from heat, cold and germs. And when our skin touch something, we feel it. So we feel soft, hard, sharp, pointed, smooth, rough, hot, cold, wet.
Okay, and don't forget to pause it and take a screenshot. Now open your copy, classwork copy. Write lesson number 1. It's revision of lesson 1. Okay, first we will revise lesson 1 and then we will do the second question of lesson 2. So first write lesson number 1, TAT date, CLASS class, WORK work, class work. Question number Question 1, WRITE, write, NAME, name, OF off, TN 10, BODY body, PARTS parts. Write neat and clean and press your pencil. Okay. Now in classwork we write now. HEAD 3 times we will write. Okay, H, line to line, EAD, head, sorry, HEAD, head. Now second, any 10 you can write. Okay, HAIR, 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 NOSE, 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 HAND, 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 hand. This one we already wrote 2 times, so that's why we are writing fast. Okay, you already learned it. HAND, hand. Sorry, I wrote it extra, so I cleaned it. Now we will write elbow. ELBOW, elbow. ELBOW, elbow. ELBOW, elbow. Next we write neck. NECK, neck. NECK, neck. NECK, neck. Next, mouth. MOUTH, mouth. MOUTH, mouth. MOUTH, mouth. Next, LEG, leg. LEG, leg.
L-E-G, leg. Next, cheek. C-H-E-E-K, cheek. C-H-E-E-K, cheek. C-H-E-E-K, cheek. Toe. T-O-E, toe. T-O-E, toe. T-O-E, toe. Now student, turn the page and new classwork of lesson 2. Now before it was revision of lesson 1. Now we will write fill in the blanks of lesson 2. Lesson 2, first line, date, classwork, question number 2. F-I-L-L, fill. I-N, in. T-H-E, the. B-L-A-N-K-S, blanks, full stop, little full stop. Now first, let me repeat again. Question number 2, F-I-L-L, fill. I-N, in. T-H-E, the. B-L-A-N-K-S, blanks. First sentence, number 1, W-E-V, blank, खाली जगह. When you draw a blank line, you have to draw with the ruler. And fourth line, 1, 2, 3, fourth line. जब आप ब्लैंक करेंगे तो रूलर से सीधी लाइन खींचेंगे. और ये देखिए, रेड लाइन, ब्लू लाइन एंड रेड लाइन. फोर्थ रेड लाइन है, उस पर आपको लाइन खींचनी है. ठीक है, और स्पेस देनी है ज़्यादा. फिर ब्लैंक के बाद W-I-T-H with O-U-R-R, eyes. We blank with our eyes. हम क्या करते हैं अपनी आंखों से? We, yes, see, S-E-E, see. We see with our eyes. Okay? See मतलब हम अपनी आंखों से देखते हैं. सेकेंड, W-E-V, ब्लैंक, फोर्थ लाइन में ब्लैंक. W-I-T-H with our ears, E-A-R-S, ears. I'm repeating it. Second, W-E-V, blank, with our ears. Ready? So क्या करते हैं हम अपनी ईयर से? We hear, H-E-A-R, we hear with our ears. Now third, W-E-V, blank, W-I-T-H with O-U-R-R, N-O-S-E, nose. N-O-S-E, nose. I'm repeating it. Third, V, W-E-V, blank, with W-I-T-H with O-U-R-R, nose, N-O-S-E, nose. क्या करते हैं हम अपनी नाक से? We have to fill the blank. Smell. We smell with our nose. Now we look at it. Fourth, pick your pencil, press your pencil and write dark. W-E-V, blank on fourth line. W-I-T-H with O-U-R-R,
T-O-N-G-U-E, tongue. Full stop. Again, fourth, W-E-V, blank, W-I-T-H with R-T-O-N-G-U-E, tongue. So what we do with our tongue? Our tongue help us to taste. T-A-S-T-E, taste. Now we will look at fifth. W-E-V, blank, W-I-T-H with O-U-R-R-S-K-I-N, skin. Full stop. Now I'm repeating it. Fifth, W-E-V, blank, W-I-T-H with O-U-R-R, skin. So what we do? Skin help us to feel. F-E-E-L, feel. Write neat and clean. Press your pencil. Now take out your homework copy. Now question number 1, revision, okay, of lesson 1. So you have to write in copy again. Lesson 1, date, homework. Question number 1, there will be 2 classwork and 2 homework. So question number 1, write, W-R-I-T, write, N-A-M-E, name, O-F, off, T-E-N, 10, P-O-D-Y, body, P-A-R-T-S, parts. So now in homework you don't have to write 3 times, just write once. Okay, if it's not fit here, then fold the page. How you fold the page? Like whole page you have to fix here and then press it, okay? And then write 10th next to 1, not on the top, here next to 1. So write numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? And now turn page. Okay, now did you turn your page? So second homework of lesson 2. Date, homework, question number 2. We already wrote this in your classwork copy. Okay? So fill in the blanks. First sentence, we blank, fourth line, first, second, third, fourth line. Okay, draw the line with the ruler. With our eyes. Second, we blank with our ears. Third, we blank with our nose. Fourth, we blank with our tongue. Fifth, we blank with our skin. Write neat and clean and press your pencil. Now it's ready. Go to the washroom and wash your hands. And ready for next period.